Ladies and gentlemen, good day and welcome to Dharmaj Crop Guards Limited Q2 and H1 FY24 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Sayam Pokarna from TIL Advisors Private Limited. Thank you, and over to Mr. Pokarna. Thank you, Neera. Welcome everyone, and thanks for joining this Q2 and H1 FY24 earnings conference call of Dharmaj Crop Guards Limited. The investor updates have already been uploaded on the stock exchange, company website, and emailed to you. In case you do not have a copy of the same, please feel free to reach out to us. To take us through the result discussion, we have with us from the management team Mr. Ramesh Talavia, Chairman and Managing Director, Mr. Jaman Talavia, Full-Time Director, Mr. Vishal Dumadia, Chief Executive Officer, and Mr. Vinay Joshi, Chief Financial Officer. We will start with the opening remarks on the financial performance of the quarter and the strategic updates, followed by the Q&A session. I would like to remind you all that everything said in this call that represents any outlook for the future that can be construed as a forward-looking statement must be viewed in conjunction with the risks and uncertainties that we face. These risks and uncertainties have been mentioned in our prospectus. With that said, I would now like to hand over the call to Mr. Ramesh Talavia. Over to you, sir. Yeah, good afternoon and welcome to the Q2 and H1 FY24 earnings conference call of Dharmaj Crop Guards Limited. We appreciate your presence on this call and look forward to discussing our company's performance for the period under review. I will start with the quarterly performance. Q2 highlights. As you can see, Dharmaj continue with its healthy financial performance in the challenging industry environment. This quarter, we reported to top line growth of 14% year-on-year, reaching revenue from operations of rupees 2,527 million. This has been primarily driven by volumetric growth. As the realization trend for the agrochemical industry in Q2 has been stabilizing and not much volatility was recorded in product pricing this quarter as compared to the last few quarters. Growth has been witnessed in all three verticals we operated in. While branded business showed modest growth of 5% this quarter, it was primarily due to the monsoon deficit in August, and this affected our momentum in the western market like Rajasthan and Gujarat. However, growth from our newly entered state has been promising, and we are witnessing a good first season in this market. We will continue to build on this performance. Institutional business has remained robust even this quarter. We witnessed a 14% growth this quarter in the domestic institutional vertical. Export institutional performance has also been encouraging, especially given the current export market environment for the industry. And Q2, particularly, we saw some orders being spilled over from Q1. However, even if we evaluate H1 FY24, the company has reported a growth of 5% year-on-year in export. Margins have remained healthy in Q2 as well. We have witnessed year-on-year improvement in EBITDA margin, and maintain a trend we witnessed the last quarter. It is important to note that these margins are despite two reasons. Q1 had higher sales contributions from brand business, and second, we saw slightly more aggression in pricing for the newly entered state, where we are establishing our foothold this year. Our Saika project update, new coming to Saika project update, as you can see from our investor presentations, the project is almost ready and commissioning of the plant is just around the corner. We expect to commission the plant by end of this month. So December onwards, we will start trial production at the site. This project has been completed as per our originally communicated timeline, despite all sort of on-ground challenges, all thanks to our team who has really worked hard on this project. And another update,
on the Saika project is that we will witness some increase in capex as opposed to the originally estimated 200 crore. There were two elements on this. First, we witnessed some cost escalations in material, labor, and some equipment costs. Second, we have installed some additional plant and equipment in the technical block. This is keeping in mind higher product mix flexibility. Although this will not lead to increase in tonnage capacity, it will enhance our ability to move beyond synthetic paracord in future. Third, lastly, although this is a smaller cost, we shifted our boiler plant to an adjacent site. We acquired this site recently and decided to switch to the boiler from a safety and risk management perspective. Our outlook for the rest of the year remains optimistic. We will continue to perform as we have done in H1 so far. The commissioning of the Saika project and our entry into active ingredients will strengthen our ability business model and positioning in the industry. I would now like to open the floor for questions. With this opening remarks concluded, thank you very much. We will now begin the question and answer session. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, आप अपने सवाल हिंदी में भी पूछ सकते हैं. कृपया करके स्टार और एक दबाइए. The first question is from line of Marshall, individual investor. Please go ahead. Yeah, good morning. Just like my first question regarding on this Kakia plant, you said that the capacity is going to increase. So how much amount the capacity is going to increase, number one? And number two, once this plant is operational, how much time will it be required to stabilize to have this regular production? And then what will be the revenue increase from this plant, you can say, on the like during the FY, remaining part of FY24, and what will be EBITDA margin considering that 60 to 70% of this product will be our backward integration. So we believe that this will really give a boost to the EBITDA margin, because currently if you are buying those 70% from market, so that much of this like you can say this contribution we will retain within ourselves. Okay. Thank you for your question. See, the CapEx, the second plant which is in progress, so we are expecting that plant will stabilize by Q3 end, and from Q4 of the current year, we'll have some commercial production. And for this current year, we are expecting not more than 10% utilization. And this will be stabilized from year FY25 onwards, and we can reach an optimum level by FY26. Now, coming to the margins, expectations of margins, once this plant will be at optimum utilization, then we are expecting EBITDA margin enhancement by 3 to 4%, but initially it will be around 1 to 2% in first year. And then how much is CapEx going to increase? Like, because everybody you only mentioned that like it's actually 200 crore, but like nobody mentioned that what is the amount like that CapEx is going to increase because of it's been mentioned already that because of escalation in the cost of the material, cement, labor costs, there was some escalation and certain machineries we added. So we are expecting this will be around 220 crore and near about that. Some certain machineries, advanced machinery we added here. So that is going to increase the overall cost of project. So Mr. by having those machines, will it increase the productivity or will it reduce the cost of the plant? Increase the capacity. It is not going to increase the capacity. It is more on the efficiency side. Whatever machineries we are using here, they are going to increase efficiency and also going to help us in the environment maintenance because certain machines of advanced technology, and earlier what we projected was of conventional models, but now we are in last 2 years what we identified that we should go for some advanced machinery. So it is going to increase the efficiency of the plant, but of course not the capacity.
That's good. And sir, like you mentioned that like during this Q2, certain orders from Q1 were spilled over. So what is the amount of that one, and how much we can see that like a normal secular turnover for the Q2, and whether this Q2 turnover will be sustained in the Q3, Q4, or is it mainly because of the season of the Q2 that like this our turnover is high rate compared to Q1, because Q1 is only 162 crores and now it is 253 crores. So see, normally export turnover are on the same range quarter on quarter, but this Q1, that whatever orders we have in export in Q1, because of availability of vessels, we could not export, so that spill over to the Q2. Otherwise, normally it remains in the same range. What is the amount for that one approximately? Around 5 to 7 crore. 7 crore around the amount like this. Thank you. Marshall, sorry to interrupt you. I'll request to come back in the question queue for a follow-up question. The next question is from the line of Ayush Mittal from Mittal Analytics. Please go ahead. Good morning, sir. Good morning. First of all, congratulations on good performance. And I'm a bit new to the company, so sir, I might have some repetitive questions. So sir, first of all, it's very good to see जो हमारी performance आ रही है इस challenging time में इस industry में काफी challenging time चल रहा है यहाँ पे best of the players have not been able to deliver. तो थोड़ा सा अगर आप overview देंगे कि industry का आपका thought क्या है कि इस समय क्यों इतना challenging time चल रहा है और आज सर situation क्या है और हम क्या थोड़ा सा differently कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इस environment में भी grow कर पाए. थोड़ा सा सर अपने thoughts इस पे दें and हम क्या डोमेस्टिकली हमने क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे वर्क किया या क्या चेंजेस किए. तो दिस इज माय फर्स्ट की क्वेश्चन. सेकंड इज वी आर आल्सो सीइंग अ वेरी शार्प जंप इन योर रिसीवेबल्स एंड ये थोड़ा हम लोग देखते थे कि हमारी वर्किंग कैपिटल पे बहुत स्ट्रांग कंट्रोल होता था. तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस शार्प जंप? सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन आई कम बैक अगेन. ये जो इंडस्ट्री है उससे हमारा जो डिफरेंस मॉडल है ऐसा है कि हम इन्वेंट्री प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं. जो टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से हम परचेज करते हैं. हमारा जनरली जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऐसा है कि सबसे जो सस्ता चीज वो पहले परचेज करते हैं और लास्ट जो सबसे कॉस्टली चीज होता है टेक्निकल इंग्रेडिएंट, तो वो लास्ट में से परचेज किया तुरंत उसको प्रोसेस करके हम उसको पैक करके सेल आउट करते हैं. तो इन्वेंट्री विद इन टाइम हम मैनेज करते हैं. तो ये हमारा सबसे डिफरेंस मॉडल रहा है. और मार्केट में भी हम जो B2B हमारा सेगमेंट है उसको हम एक्सपांशन करते जा रहे हैं ऑल ओवर पाइन इंडिया में. जो छोटे छोटे फॉर्मुलेटर है, छोटे छोटे कस्टमर है, उसको भी अप्रोच करके उसको हम सर्विस दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल, जो आज तक मेनली कोई बड़ा कंपनी नहीं दे पा रहा है. तो वो हमारा मेन पॉइंट रहा है कि जो बिजनेस भी हमारा ग्रो हुआ है और जो इन्वेंट्री है वो भी हम मैनेज करते हैं. तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑपरेटिंग फाइनेंस है, मतलब जो वर्किंग कैपिटल है वो हम मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर. ओके. और जो हमने सेल्स का जो पॉलिसी रखा है, जैसे हमारा NCR है, नेट कैश रेट वाला, तो हम कैश में ज़्यादा बिजनेस ऑपरेट करते हैं जनरली ब्रांड में. और B2B में हम 90 to 120 डेज वाला जो कस्टमर है तो डिसिप्लिन में काम करता है, उसी कस्टमर को हम सर्विस देते हैं. ओके. कोई हमने प्रोडक्ट्स का कितना एक्सपेंशन या क्या उसमें हमने चेंजेस किए कि जिसकी वजह से हमारी ये ग्रोथ आई. और सेकेंड की ये जो स्मॉल फॉर्मुलेटर्स की हम बात कर रहे हैं, स्मॉल B2B कस्टमर, तो सर गिवन द साइज ऑफ कंपनी जो हम साइज या स्केल से आ गए हैं, क्या दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प अस कंटिन्यू द ग्रोथ जो आप एम कर रहे हैं ऑफ हाई ग्रोथ ऑफ 25-30% जो आपका एक एम रहता है, क्या वो ग्रोथ आगे हम कंटिन्यू कर पाएंगे बेस्ड ऑन दिस मॉडल? इसमें दो कैटेगरीज है. जैसे B2B है ना, उसमें B लेवल के कस्टमर है जो छोटे छोटे फॉर्मूले, और बड़ा है कॉर्पोरेट लेवल का. दोनों जगह पे हमारी एंट्री है. तो अभी तक ये जो छोटे छोटे कस्टमर थे उसी को हम ज़्यादा कवर नहीं दे पाते थे, लेकिन हमने दिस ईयर से उसको फोकस करना स्टार्ट किया, थोड़ा एम्प्लॉइज बढ़ाया, तो वहाँ से भी अपने को ग्रोथ अच्छा मिल रहा है. और जो कॉर्पोरेट लेवल का हमने लास्ट ईयर से एक्टिविटी स्टार्ट किया था, उसकी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट QC डिपार्टमेंट के साथ लिंक है, तो इस तरह से अपने को रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रैली से पर बिजनेस स्टार्ट किया, कोरोमंडल से बिजनेस स्टार्ट किया. तो ये कई मॉडल्स हैं कि जिसकी वजह से अपने को B2B में ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, और वो आगे भी नेक्स्ट ईयर भी आने वाले समय में भी कंटिन्यूस रहेगा, उसमें ग्रोथ भी मिलता रहेगा. और सेकेंडली अपना जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाला आएगा,
तो इसकी वजह से अपना जो प्रोडक्ट रेंज है वो बढ़ जाएगा। और हम नया प्रोडक्ट भी ऐड किया है, तो ये नया प्रोडक्ट ऐड करने से, नया कस्टमर ऐड करने से ये अपने का डबल स्टोरी ग्रोथ मिल रहा है। ओके सर, ये जो लार्ज कस्टमर्स हैं जैसे रैलिस है, कोरोमंडल है, ये सब ऑलरेडी मार्केट में बहुत ही इंट्रेंच्ड प्लेयर है। वन सेकंड, इसमें भी बहुत कंपटीशन है, तो मतलब इनको हम पेनिट्रेट करके इनको ग्रो करने के लिए हमारा क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है? व्हाई आर दे बाइंग फ्रॉम अस एंड नॉट, मतलब हम हमारी इनसे क्यों ग्रोथ आ पा रही है? हमारा ऐसा क्या हम डिफरेंटली कर रहे हैं, ये क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है वर्सेस द कंपटीशन? डिमांड जनरली उसको जो टाइम पे मटेरियल चाहिए वो टाइम पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा, जैसे रैलीज का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऐसा है कि वो हर एक लोगों से मार्केट से माल परचेज नहीं करता, उसका क्यूसी डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा, वही वेंडर से वो परचेज करेगा। तो हमने एक साल तक उसका हमारी 6 से 7 प्रोडक्ट हमने अप्रूव करवाया रैली क्यूसी में। तो अब इस साल से वो थोड़ा थोड़ा बाइंग चालू किया। जैसे उसका सिस्टम ऐसा है कि फर्स्ट टाइम वो अगर कोई मटेरियल उसको 50 टन चाहिए तो 50 टन न्यू वेंडर से वो नहीं लेंगे, पहले वो 5 टन लेगा, फिर दूसरी बार 10 टन लेगा, फिर वो 50 टन लेगा। अगर हम L1 में हो गए तो भी नहीं लेगा। तो ये हमने सिस्टम लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, तो इस साल हमें एंट्री मिली, हमने 6-7 प्रोडक्ट उसको प्रायोरिटी स्टेज में भेजा है। अब नेक्स्ट टाइम से हमारा जो ग्रोथ आएगा वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। ओके ग्रेट सर, मैं सेकंड क्वेश्चन है कि जो हम लोग इतना बड़ा केपेक्स कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं, अभी तक हमारी स्ट्रेंथ देखा जाए तो वो थी फार्मर मार्केट, फॉर्मुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इट वाज मोर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। और कई बार हम देखते हैं जब इस बैकग्राउंड से कोई होता है और मैन्युफैक्चरिंग में जाता है तो इट्स नॉट अ इजी जर्नी। इनिशियल काफी ट्रबल्स आती हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एफिशिएंसी एंड ऑल दो थिंग्स, बट गिवन इतना बड़ा हमने केपेक्स कर लिया और पूरा कंप्लीशन पे है, तो कैन यू शेयर मोर अबाउट इट एज टू व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि इसको हम अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे, स्केल अप कर पाएंगे, या इसमें हमारी एफिशिएंसीज आ पाएंगी? तो कोई भी नया प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें इश्यू प्रॉब्लम तो आता रहता है ना, तो उसका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता ही है। तो हमने तो ये 4 साल पहले डिसाइड किया था कि अपने को इंग्रेडिएंट्स में जाना है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में, और आज हम वो करके बैठे हैं। तो उसमें सब इन एंड बट्स है। जैसे हमने नया प्रोडक्ट भी इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट हमने ऐसा सेट किया है कि उसमें नया केमिस्ट्रिकल फ्यूचर में कोई भी आता है तो वो हम कर पाते हैं उसमें, क्योंकि जो टेक्निकल ग्रेड का जो प्लांट डाला है उसमें क्या चाहिए, उसको कितना टेम्परेचर तक ले जाते हैं, कितना माइनस टेम्परेचर पे जा सकते हैं, क्या प्रोसेसिंग है, तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने वो एस्टेब्लिशमेंट किया है। और सिंथेटिक पैराथोड का हमारा मेजर प्लांट था, तो पैरेलल हमने 5-7 प्रोडक्ट और भी ऐड कर लिया, तो वो साथ साथ में हम अभी से प्रोडक्शन कर पाते। जैसे मैंने बताया आपको कि CTPR है, डाइमिथोमॉर्फ है, थायोमिथोक्साम है, ये रूटीन प्रोडक्ट सारा जो है वो हम पैरेलली इसी प्लांट में बना पाएंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो मल्टीपल प्रोडक्ट होगा, तो ये क्योंकि एग्रीकल्चर है ऑलवेज कंटीजेंसी पे चलना पड़ता है, तो जो प्रोडक्ट का डिमांड आया तो डिमांड के बेस पे हम उसको प्रोडक्शन करके मार्केट को सर्व कर पाते। तो ये लेवल का हमने प्लांट फैसिलिटी डेवलप किया है। थैंक यू सर, आई विल गेट बैक इन टच। वेलकम। Thank you. Next question is from line of Harsh, a professional investor. Please go ahead. Hello sir, congrats for the good set of results sir. Maybe no question. So the first thing was we see an increase in receivables. So is this because इस quarter हमने higher B2B formulation sales किया है, जहाँ पे हमारा receivable cycle थोड़ा लंबा होता है? Yeah, especially receivable mainly, as you know that Q2 is always the best month for in terms of sales. So our normal credit periods are around 90 to 120 days. So in August month we have maximum sales, so that collection will comes in the month of October and November. So it is a normal pattern in Q2, and as on 30th September our receivables are always high. So it is just normal, it is not an extraordinary feature for this. And is there a receivable difference in our B2B and our B2C business? In terms of credit? In terms of credit, I mean. So no, there is not much difference. We have same terms of credit for both kind of verticals. Okay. My next question was about the fire incidents which we had in our technical plant. Can you talk how that happened and why did we have fire in a plant which was only under construction and not operational? Yeah, fire. Hello.
Hello, sir. Good afternoon. Yeah, good afternoon. फायर पे सर ऐसा हुआ था कि जो इंस्ट्रूमेंट sorry to interrupt you, but your audio is not coming clearly. हेलो Harsh, may I request you to mute your line from your side, please? Thank you. Hello. Sir, you may go ahead, yeah. ओके, जैसे फायर का ऐसा इश्यू हुआ था, उसमें मेन जो इंस्टॉलेशन मटेरियल और पैरेलल एक्टिविटी सब चल रहा था। तो पैरेलल एक्टिविटी की वजह से जो वेल्डिंग वो सब चल रहा था, उसी की वजह से माइनर फायर हुआ ऐसे। हेलो। So in terms of production or anything or our plans, that didn't affect anything, right? So yeah, it is during construction of activity in the building, which was some spark caused a minor fire. So it doesn't cause much loss to us, and it is under control. And within half an hour, it is under control. So nothing much. It's a small fire. Okay, perfect. And so a last question. I think in the last question that you were responding, you mentioned something about CTPR. So if we have plans to manufacture CTPR, but we don't have licenses currently, right? Can you talk a little bit more about registrations for CTPR in India? Yeah. CTPR actually, chlorantraniliprole, technically is the patented molecule. In last August, they have off patent. And we have, meanwhile, we taken license, and that's why we have planned for this product immediately. So we already have the license. Okay, perfect, sir. Thank you for answering my questions. Yeah, welcome. Thank you. Next question is from the line of Dhanil Desai from Total Capital. Please go ahead. Hi, good morning, sir. And first of all, congratulations for very good numbers. सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अपने ब्रांडेड फॉर्मुलेशन साइड पे देखें तो इरेटिक मॉनसून होने के बाद भी हम 5% ग्रो कर पाए, बट हिस्टोरिकली हम काफ़ी अच्छे ग्रोथ मतलब 20% प्लस ग्रोथ से हम ग्रो कर पाते हैं। तो सर गिवन वॉट एवर इज द करंट सिचुएशन, उसके हिसाब से इस साल हम कैसे उसका ग्रोथ देख रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में जैसे हम लोगों ने पिछले साल कुछ नए स्टेट ओपन किए थे, नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र, तो वहां से हम लोगों को ग्रोथ आया है। और जैसे सर ने बताया कि 5% ग्रोथ ही आया सेकंड क्वार्टर में, उसका वजह था वेस्ट जोन में जो ड्राई स्पेल था, ड्रॉट कंडीशन, जहाँ पे हमारा ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट है, तो वहां से थोड़ा सेटबैक रहा। पर आगे जो न्यू ओपनिंग स्टेट है वहां से भी, और जहाँ पे हम लोग एस्टेब्लिश स्टेट है वहां से भी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी जो है वो फील्ड लेवल पे डिमांड जनरेशन का है। और वैसे देखे तो वॉल्यूम वाइज ग्रोथ देखे तो मोर देन 25% हम लोगों ने वॉल्यूम वाइज ग्रोथ किया है, पर मार्केट में प्राइस पिछले क्वार्टर से बहुत डाउन थे, तो उसकी वजह से रेवेन्यू वाइज ग्रोथ थोड़ा कम दिख रहा है ब्रांडेड में। ओके तो वॉल्यूम ग्रोथ 25% इवन इस क्वार्टर में था हमारा। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ चीज आई। अच्छा, ओके। एंड सर रवि सीजन कैसे देख रहे हो, मतलब आपको क्या ग्राउंड लेवल पे फीडबैक मिल रहा है, और प्राइसिंग सिचुएशन मतलब अभी भी स्टेबल हुआ है या अभी भी प्राइसेस आर फॉलिंग? प्राइसिंग सिचुएशन अभी देखे तो काफी स्टेबल हो गया है। और रबी का जो कंसर्न है, तो लास्ट में जो अगस्त ड्रॉट में गया, फिर सितंबर में वेस्ट जोन में अच्छा बारिश हो गया था, तो रबी का एकरेज ऑप्टिमिस्टिक है और हम लोग उसमें से अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए देख रहे हैं। ओके, तो सर 15% टाइप ग्रोथ रेवेन्यू लेवल पे पॉसिबल है या कैसे देखना चाहिए सर इसको? रूटीन ग्रोथ जो है वही एक्सपेक्ट। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा अपने टेक्निकल साइड पे है। तो मतलब जो सैखा वाला प्लांट है उसमें हमने लिखा है कि हमने ऑलरेडी 13 रजिस्ट्रेशन रिसीव किए हैं और 2-3 एक्सपोर्ट मार्केट में रजिस्ट्रेशन है। तो सर इस सेगमेंट में सिंथेटिक पायरोथेट के सिवा और कोई रजिस्ट्रेशन हमने रिसीव किए या सब सिंथेटिक पायरोथेट के ही है?
सिंथेटिक पैराफिन के अलावा हमने दूसरा मॉलिक्यूल भी रजिस्ट्रेशन में डाला है, तो उसमें मेनली 13 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया है और बाकी सब 29 अंडर प्रोसेस में है। तो सर हम काफ़ी नज़दीक है अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो थोड़ा ये बताएंगे कि किस टाइप के प्रोडक्ट आप किसके साथ हम अपना कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करेंगे, बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे एक्सपोर्ट मार्केट में इवन डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो हम कैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटेजी रहेगा वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हमारा जैसे मार्केट के हिसाब से स्ट्रेटेजी हमने ये डिसाइड किया है कि जैसे सिंथेटिक पैराफिन के अलावा जो CTPR है, मतलब क्लोरेंटेनिपॉल है, डाइमिथोमॉर्फ है, थायोमिथोग्राम है। जो थायोमिथोग्राम हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि वो हमारा इंटरनल कंजप्शन बहुत बड़ा है, हम ईयरली 150 से 200 टन यूज करते हैं, तो वो इन हाउस हो जाएगा 100% पूरा। और डाइमिथोमॉर्फ में दोनों वर्टिकल्स देख रहे हैं, एक्सपोर्ट भी अच्छा है और डोमेस्टिक मार्केट अभी ग्रोइंग हो रहा है, न्यू मॉलिक्यूल्स है। और तीसरा ये CTPR जो मैंने आगे भी बात किया था कि वो अभी रिसेंटली पैटर्न ऑफ हुआ है, तो उसका भी डोमेस्टिक में ग्रोइंग मार्केट रहेगा और उसका अलग अलग 3-4 फॉर्मुलेशन है, तो वो सब में अपना एंट्री होने से अपना इंटरनल कंजप्शन जैसे ब्रांड में B2B में भी बढ़ेगा और हम एक्सपोर्ट में भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उसको स्टार्ट कर दिया। और ये तो इसके अलावा जो सिंथेटिक पैराफिन का मॉलिक्यूल है जैसे सेपरमेथ्रिन है, अल्फामेथ्रिन, परमेथ्रिन, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही और अपना वो एक्सपोर्ट में भी और जो यहाँ मल्टीनेशनल के साथ टाइप और जो कॉर्पोरेट लेवल का टाइप है वो हमने ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा मल्टीपल स्ट्रेटेजी रहेगा। ये 5 से 6 प्रोडक्ट लेके हम एंटर हो जाएंगे मतलब दिसंबर लास्ट तक, और जनवरी फरवरी से जो न्यू ईयर का सीजन का प्लानिंग रहता है तब तक हम रेडी कर देंगे अपने लेवल पे। अच्छा, और सर अभी के जो प्राइसिंग सिनेरियो है उसके हिसाब से जो भी 5-6 प्रोडक्ट हम चालू करेंगे उसमें क्या 33 से 35% ग्रॉस मार्जिन पॉसिबल है, या पहले हमको थोड़ा कम ग्रॉस मार्जिन पे काम करना पड़ेगा और जब प्राइसिंग सिचुएशन इंप्रूव होगा मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अच्छा, ओके, तो हम थोड़ा लोअर ग्रॉस मार्जिन पे भी करेंगे टू गेट एंट्री इनटू द मार्केट। पर इसमें ऐसा है ना सर, जैसे जो जेनरिक मॉलिक्यूल है, जो एस्टेब्लिश मॉलिक्यूल जैसे साइपर है, अल्फा है, परमेथ्रिन, उसमें हमें एंट्री लेने के लिए थोड़ा मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये न्यू मॉलिक्यूल्स है, CTPR है, डाइमिथोमॉर्फ है, तो उसमें तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो सबका नया है, अपना नहीं आया। वैसे एज ए मॉलिक्यूल नहीं है ये, तो वो सबका रहता है, उस हिसाब से मार्जिन वाइज उसमें अच्छा रहता है। Thank you. Dhanil, I'll request to come back for a follow-up question. The next question is from the line of Jainam Girani from Swan Investments. Please go ahead. Good afternoon, sir. Thanks for giving this opportunity and congratulations for a great set of numbers. So मेरे थोड़े questions हैं। तो एक सर आप अभी बता रहे थे कि हमारे टेक्निकल प्लांट में कोई नए प्रोडक्ट्स भी रहेंगे जो नए मॉलिक्यूल, तो आगे जाके व्हाट इज द मिक्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग के कितने नए मॉलिक्यूल रहेंगे और कितने जेनरिक रहेंगे? ये नया मॉलिक्यूल मैंने बताया ना, जैसे CTPR है, डाइमिथोमॉर्फ है, थायोमिथोग्राम है, जो पहले हमने प्लान नहीं किया था। अभी ये फर्स्ट फेज में हमने वो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। नेक्स्ट फेज जो रहेगा उसमें और मॉलिक्यूल रहेगा तो जो मार्केट के हिसाब से उसकी डिमांड वाला मॉलिक्यूल रहेगा, जैसे टोल्फेन पायरोइड है या पाइमेट्रिजोन है, डिनोटेफ्यूरॉन है, उस तरीके का प्रोडक्ट का भी हम नेक्स्ट फेज में प्लानिंग करते रहेंगे। अच्छा, तो प्रोजेक्ट है ना सब जेनरिक ही रहेंगे ना, सेकंड फेज में थोड़े से स्पेशलाइज जाएंगे ना? हाँ, इसमें ये प्रोडक्ट इसलिए ये प्रोजेक्ट हमने पूरा एज अ मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाया है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट उसमें सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें होना चाहिए इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड। विटीसाइड का एक जो मॉलिक्यूल है वो नहीं कर पाते क्योंकि उसका प्रोजेक्ट हमें अलग ही करना पड़ता है, ये प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते। एंड सर एक मुझे थोड़ा जानना था कि हमारा रिसीवेबल जितना बढ़ गया है तो यही ट्रेंड रहेगा आगे जाके कि अभी कुछ इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कम करने का? सर जी, इस बिजनेस में ऑलवेज ऐसा होता है, आप किसी भी कंपनी का उठा के देखो तो सेकंड क्वार्टर ओनली फॉर सेल्स, बराबर, सेल्स हाईएस्ट रहता है। तो जो सेल्स अपना अगस्त सितंबर में रहेगा उसका पेमेंट तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आएगा। तो पेमेंट टर्म जनरली 90 to 120 डेज रहता है। तो हमारा सेकंड क्वार्टर ऑलवेज फोकस रहता है सेल्स पे, और
जो पेमेंट टर्म्स है उसी हिसाब से थर्ड क्वार्टर ऑलवेज कलेक्शन का रहता है मेजरली बाकी सेल्स तो पैरेलल होता ही रहता है। तो ये टेंडेंसी है इस बिजनेस का, तो उसी हिसाब से हमारा भी है, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर से सेल्स भी जो बढ़ा है तो नेचुरली रिसीवेबल भी बढ़ेगा। और जनरली ये क्या होता है कि सितंबर वगैरह से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, तो कलेक्शन का टाइम अक्टूबर से स्टार्ट होता है। अक्टूबर नवंबर जो है वो कलेक्शन का पीरियड है। ओके। एंड सर हमारा मेन मार्केट अभी भी महाराष्ट्र या गुजरात ही है ना? फॉर टेक्निकल स्टाफ भी वही फोकस एरिया रहेगा ना इनिशियली? हमारा गुजरात, एमपी और राजस्थान वेल एस्टेब्लिश मार्केट है, और थर्ड हम महाराष्ट्र में डे बाई डे एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न जोन है उसमें हम मतलब सब तरीके से एक लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट है हमारा। और बाकी का जो एरिया है ईस्टर्न पार्ट में भी हमारा प्रेजेंस है। नॉर्थ इंडिया हमने लास्ट ईयर से चालू किया है और साउथ इंडिया नेक्स्ट ईयर से चालू करने जा रहे हैं। तो उस तरीके की हमारी ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी रहती है। और B2B जो बिजनेस है वो हमारा ऑल ओवर इंडिया में, पान इंडिया में है। वहाँ कोई हमें ऐसा नहीं कि स्टेट में नहीं है उधर है। पर B2B में भी हम आप बता रहे हो जैसे स्ट्रॉन्ग तो वेस्टर्न जोन में है और नॉर्थ और साउथ तो ऑपरेट कर ही रहे हैं। Thank you, sir, and wishing the whole team a happy Diwali. Thank you. Happy Diwali. Thank you. Next question is from the line of Neeraj Modia from Annual Research. Please go ahead. या गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है सर कि हमारा जो B2C फॉर्मुलेशन बिजनेस है वहाँ पे लास्ट 2-3 साल से हम देखें तो हमारे प्रोडक्ट लॉन्चेस काफ़ी एग्रेसिव हैं। मतलब इन लास्ट 3-4 ईयर्स वी हैव लॉन्च क्लोज टू 72 प्रोडक्ट्स, उसमें से 21 प्रोडक्ट्स तो लास्ट ईयर ही लॉन्च किए थे। और जैसे आपने बताया कि CTPR यामिक्साम तो ये अभी हमने लॉन्च किया, जैसे ब्रह्मोस है, फिर लोखंडी है, तो ये हमने सितंबर मंथ में लॉन्च किया। लिथॉक्स है। तो सर ये जानना था आपसे कि इन B2C बिजनेस जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और वी नीड टू बी वेरी क्लोज टू द फार्मर्स, कनेक्टेड टू द फार्मर्स, तो हम हमारा पेनिट्रेशन लेवल कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं? जैसे इंडिया में अगर देखें तो क्लोज टू 11 से 12 करोड़ फार्मर्स हैं। तो अगर आप पर्सपेक्टिव दे जहाँ से हमारा B2C सेल ज़्यादा आ रहा है वेस्टर्न बेल्ट से, वहाँ हमारा फार्मर पेनिट्रेशन कितना है? बिकॉज जैसे जैसे वो बढ़ेगा, डोसेज पर एक्रेज बढ़ेगा, क्रॉप बढ़ेगा, तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक आपने लिखा है एनुअल रिपोर्ट में कि हमने मार्केटिंग टीम को स्ट्रेंथन किया है, तो सर उसके अलावा हम क्या चीज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा फार्मर पेनिट्रेशन और बढ़े और हमारा सेल्स बढ़ता रहे वही फार्मर को? ओके, गुड आफ्टरनून, विशाल है। अभी B2C में देखें तो मोर देन 3 लाख फार्मर को हम लोग सर्व कर रहे हैं और स्ट्रेंथ हमारा B2C का पूरा टीम है उसके KRA में ही हम लोगों ने फिक्स किया है फील्ड लेवल डिमांड जनरेशन। मतलब फार्मर के फील्ड पे जाना है, डेमोस्ट्रेशन करना है, फार्मर मीटिंग करना है। फील्ड डे मतलब जहाँ पे रिजल्ट मिला है हमारी प्रोडक्ट का वो दूसरे किसानों को दिखाना है। उससे माउथ पब्लिसिटी के थ्रू हम लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो ये जो की स्ट्रेटेजी है फील्ड लेवल डिमांड जनरेशन वो मेन है, उसकी वजह से हम लोग B2C में ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरा चीज हमारे पास जैसे आप डेटा देखेंगे तो मोर देन 400 CIB लाइसेंस है। तो उसमें से हम लोग एक एनालिसिस करते हैं कि फार्मर का कॉस्ट कौन से मॉलिक्यूल में कम जाएगा या तो कॉम्पिटिटिव रहेगा, उसमें चैनल को मार्जिन और कंपनी को मार्जिन कैसे अच्छा रहेगा, उस हिसाब का स्ट्रेटेजी करके प्रोडक्ट चूज करते हैं और उसके ऊपर फिर डिमांड जनरेशन एक्टिविटी करते हैं। तो हमारा जो ग्रोस मार्जिन है वो भी इम्प्रूव होता है और हम लोग कंपटीशन में सस्टेन कर पाते हैं। दूसरा चीज हम लोग जैसे MD साहब ने बताया कि इन्वेंट्री में और डेप्टर में काफी हमारा अच्छा डिसिप्लिन भी है और कंट्रोल है। तो उसकी वजह से आप सेल्स रिटर्न देखेंगे दूसरी कंपनियों से तो काफी हमारा कंपैरेटिवली लो है। वो भी एक है कि हम लोग सस्टेनेबल बिजनेस आगे कर पा रहे हैं। सर ये हमारा जो वेस्टर्न बेल्ट है जैसे गुजरात है, MP है, तो हमारा जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस है आज जो फर्स्ट हाफ में हमने कुछ 110 करोड़ की सेल्स की है, तो वो ब्रेकअप किस हिसाब से है कि मतलब जैसे गुजरात की मार्केट कितनी है और हम
उसमें कितना तक पेनेट्रेट कर पाएँ और कितना हम और बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उनको मैच्योर होने में भी टाइम लगता है। तो हमारी हर एक प्रोडक्ट, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमने 2-3 साल पहले लॉन्च की और अभी वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी कर रही है, तो कितना टाइम लगता है एक प्रोडक्ट को मैच्योर होने में और उसको साइजेबल रेवेन्यू जनरेट करने में? कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करने में हम लोगों को 2 साल लगता है। पहले साल हम लोग डिमांड जनरेशन एक्टिविटी करते हैं और दूसरे साल उसका वॉल्यूम हम लोगों को मिलता है और उसमें कंट्रीब्यूशन है हम लोगों का, मतलब अच्छा रहता है। और 5 स्टेट में आपने जो बात किया कि गुजरात और ये गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, और उसमें हमारा 70% बिजनेस जो है अभी उसमें से आ रहा है। बाकी जो न्यू लॉन्चिंग स्टेट है वहाँ पे हम लोग डेवलपिंग स्टेज में है। गुजरात का आप जो बात कर रहे थे, अप्रोक्सीमेट 2000 करोड़ का मार्केट है, उसमें हम लोग 60 to 70 करोड़ अभी बिजनेस कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और यहाँ पे भी हम लोग नेक्स्ट ईयर 70 to 80 करोड़ से प्लान कर सकते हैं। Thank you. Sorry to interrupt you, Neerav. I'll request to come back in the question queue for a follow-up question. I request to all the participants, please restrict to 2 questions per participant, and please come back in the question queue for a follow-up question. Next question is from the line of Shikhar Mundra from Vivo Commercial. Please go ahead. Hi sir, first of all congrats on a good set of numbers. So मेरे को ये समझना था, जो ये 220 करोड़ का लगभग केपेक्स कर रहे हैं, इसका इकोनॉमिक्स कैसे है, लाइक इसका रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है और कितना कैपिटली यूज होगा, कितना बाहर बेचेंगे, एंड काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल इबिटा कितना इस पे अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? Okay. So as I mentioned earlier कि हमारा EBITDA margin on optimal utilization होगा तो 3 to 4% additional margin will get from this new plant. और जो अभी हमें 220 करोड़ का already we incurred capex on this, so इससे we are targeting almost 3 times asset turn ratio when it reaches the optimal utilization capacity. Okay, so around 650-670 करोड़ का around revenue potential है, उसमें how much would you say, like 60-70% would be captively consumed? No, captive consumption will be around 25%, 25 to 30% will be captive consumption, and other will mostly will into the, we are targeting export market and the domestic institutional market. So लगभग I would say 150-200 करोड़ का production will be used captively and the rest will add to the top line, 350-400 crores. Correct. Acha, okay. And utilization, it will be the outside sales other than captive, we are targeting around 600 crores. That is outside sales other than captive? Yes, yes. Acha, So okay. We reach optimum capacity utilization. Acha. So we are planning for a turnover of about 1,000 crores total on a company level. Is that right? When it reaches optimum utilization? So the outside sale will be around 600 crore, we are saying, and around 100 crore, 750 crore, we are using captive consumption. So 800 crore will be the total turnover. अच्छा, okay. So अभी जो existing plant है उसका क्या capacity utilization है? So it is around 50%. 45 to 50% range. अच्छा, okay. Right. दूसरा, I want to understand your product life cycle. तो वो like एक product launch होता है तो उसका like कितना, I mean first 5 years में कितना % of उसका sales होता है, फिर कैसे taper down होता है, और rather you can tell me कि last 5 years में जो product launch हुए थे अभी कितने % of sales है? देखिए प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखो तो डिपेंड करता है मार्केट पे, बराबर। कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करे और दूसरे तीसरे साल अगर उसका कोई ऑप्शन दूसरा मिल जाए कि भाई उससे ये चीप है और इफिकेसी उसका ज़्यादा है, तो ये डाउन हो जाता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखो तो आज अगर हम कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसका आने वाले 2-3 साल तक उसके मार्जिन वाइज भी अच्छा रहता है और ग्रोथ भी रहता है। उसके बाद आगे देखते कोई ऑप्शन दूसरा मिलता है तब उसी बेस पे कंटीजेंसी बेस पे हम प्लान करते हैं। पर हमने ये स्ट्रेटेजी बनाया है कि ईच एंड एवरी ईयर हमारा मार्केट एनालिसिस, मार्केट सर्वे चलता रहता है और
2 से 3 प्रोडक्ट का हम कस्ट निकालते हैं कि ये 2 या 3 प्रोडक्ट है कि उसको अपने को मार्केट का अंडरस्टैंडिंग समझ के उसको लॉन्च करते हैं और उसका सेगमेंट डिसाइड करते हैं ये क्रॉप में, ये पेस्ट में या एक क्रॉप में, ये वीट के लिए ये प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है। तो उसी बेस पे फर्स्ट ईयर हम मार्केट डिमांडिंग एंड लॉन्चिंग इंट्रोडक्शन वो सब करते हैं। नेक्स्ट ईयर उसका आउटपुट मिलता है। तो अगर उसका लाइफ अच्छा है तो वो आगे तक चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। अदरवाइज क्या होता है, वो थोड़ा वॉल्यूमेट्रिक कम होगा लेकिन कंटिन्यूस चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल 5 साल के बाद वो प्रोडक्ट पूरा बंद हो जाए, पर उसकी मार्केट के हिसाब से चलता रहता है। क्योंकि आप मार्केट में देखो तो पिछले 25-30 साल से कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि वो 100% बंद हो गया, फिर उसकी डिमांड नहीं है। जो आता है उसकी स्पेस कर लेता है और कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट कंटिन्यू चलता रहता है। ओके ओके फाइन ऑल राइट थैंक यू सर Thank you. Thank you. I request all the participants, please restrict to 2 questions per participant. Next question is from line of Shreya Pokarna from Niveshaay. Please go ahead. Yeah. What is it? Yes. Hello. Yeah, hi. Thank you for the opportunity and congratulations on a very good set of numbers. सर मुझे पूछना था कि जो हमारा टेक्निकल वाला प्लांट है उसमें हम एक्सपोर्ट पे आप क्या गाइडेंस दे सकते हैं कि एक्सपोर्ट कितना टारगेट कर सकते हैं हम एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे एक्सपोर्ट में ये शॉर्ट गेम नहीं है मैडम, ये है ना लॉन्ग टर्म गेम है। जैसे हमने अभी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पिछले लास्ट ईयर से चालू कर दिया है। जो कंट्री में अपना रजिस्ट्रेशन मिलना होगा वो मिल जाएगा, उसी हिसाब से वहाँ हम उसको सेटअप कर सकते हैं। और एट प्रेजेंट लेवल पे अपना डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो कंट्रीज में रेगुलरिटीज कम है, जो रेगुलेटरी कम है, वहाँ हमारा एंटर जो अभी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं वहाँ तो स्टार्ट हो ही जाएगा और नेक्स्ट पेज पे जो रजिस्ट्रेशन मिलता जाएगा उसी हिसाब से हम उसको एक्सपोर्ट में बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो आपके पास कोई टाइमलाइन है ये एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन जो हमने अंडर प्रोसेस है उसका? टाइमलाइन इसमें मैडम ये अपने हाथ में नहीं होता, कंट्री टू कंट्री जो रेगुलेटरी है उसके हाथ में रहता है। कहीं आ जाता है तो 6 महीने में भी आ जाता है, कहीं साल भी लगता है। तो ये ईयर एंड पे हमें काफी रजिस्ट्रेशन में प्रोडक्ट अप्रूव होने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर से हमें वो बेनिफिट ले सकते हैं। पर हम श्योरली नहीं कह सकते ना कि भैया कल अपने को हो ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस है, कहीं क्वेरी आता रहता है तो उसका अपने को टाइम भी लगता है। ओके ओके, थैंक यू सर। Yeah. Thank you. Next question is from the line of Rahul Shah from Crown Capital. Please go ahead. हेलो गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर जी ये 220 करोड़ केपेक्स जो नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है उसका आपने पोटेंशियल बताया, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो फिर कब तक एक्सपेक्ट करेंगे आप? 2027 तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में आ जाएगा इतना। तो 2000 मतलब FY27 के वो ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, तो भी नेक्स्ट मतलब इनिशियल स्टेज पे और फिर FY26 में फिर तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें? 24, 5, 6 and 7 मतलब 4 साल में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, 3 से 4। अच्छा, और करंट सिनेरियो की बात करें तो अब तक Q3 में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? हाउ इज द डिमांड बिन, और फिर आगे बाकी का साल में जनरली इस बिजनेस में एग्रोकेमिकल में ऐसा होता है, जो खरीद है बिजनेस जो Q1 और Q2 है, तो उसमें 60 to 70% अराउंड 60% बिजनेस खरीद में होता है और 40% अराउंड बिजनेस रबी में होता है। और रबी का बिजनेस होता है ना, वो जनरली श्योर होता है, क्योंकि उसमें इन एंड बर्ड्स नहीं आता, बारिश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और खरीद का बिजनेस रेंज पे डिपेंड रहता है। तो अभी प्राइस भी मोस्टली स्टेबल है। क्रॉप जो सोइंग मेथड है, मतलब सोइंग हो रहा है हार्वेस्टिंग के बाद, वो भी ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा है। क्रॉपिंग पैटर्न में भी कोई उतना चेंजेस नहीं है। तो ये रबी सीजन एट नॉर्मल होने वाला है और अपना जो ग्रोथ रेट है वो हम मेंटेन करेंगे, वैसा ऑप्टिमिस्टिक लेके चल रहे हैं। ये ग्रोथ आप क्वार्टरली मतलब ईयर ऑन ईयर बोल रहे हैं कि पूरे साल के बारे में बोल रहे हैं? आप मेंटेन करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर, जैसे मैंने बताया, जैसे ईयर ऑन ईयर करके आ रहे हैं वैसा ना? और मार्जिन भी रहेगी इसी रेंज में? या मार्जिन भी उसी रेंज में। ठीक है, आई गेट बैक इन क्यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वेलकम। Thank you. Next question is from the line of Yogansh Jeswani from Mittal Analytics. Please go ahead.
Hi, thank you for the opportunity. Am I audible, sir? Yes, yes, बोलिए. जी, थैंक यू सर. काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आंसर हो गए. एक बस क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन कर लीजिए. तो जैसे सर हम लोग आपके नंबर्स देखते हैं तो मोस्टली हम लोग का Q1 और Q2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है, फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा आता है, उसमें से भी Q2 काफ़ी अच्छा आता है. तो क्या अब जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप लोग ने और सारी मार्केट्स एड ऑन किए, नए नए स्टेट्स में हम लोग एंटर कर रहे हैं और काफ़ी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या उन सारी चीज़ों से हम ये भी मान सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो सेकंड हाफ है, Q3 और Q4, उसके नंबर्स कंपेयर टू जो हमारा फर्स्ट हाफ है उसके कंपैरिजन में थोड़े और बेटर आने लगेंगे, कि अभी भी हमें लगता है कि फर्स्ट हाफ ही हमारा ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा और सेकंड हाफ कंपेरेटिवली उससे थोड़ा कम आएगा? ये जैसे अपना इंडियन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है तो डिपेंड करता है क्रॉपिंग पैटर्न पे, बराबर, और सीजन पे. तो जो रेनी सीजन होता है ना सर, उसमें जनरली पेस्ट अटैक ज्यादा रहता है रेनी सीजन, मतलब खरीफ सीजन में. तो नेचुरली है, जो मैंने आगे बताया वैसे 60% अराउंड खरीफ में ही टोटल जो कंजम्पशन है वही होता है, और रबी में थोड़ा कम रहता है. वो प्रोडक्ट का डिपेंड नहीं करता, वो क्रॉप पे डिपेंड करता है. सपोज जो पेस्टिसाइड हाईएस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप है जनरली पैडी है, कॉटन है, बराबर है, तो वो खरीफ में ही मेजर होता है, रबी में नहीं होता है. तो रबी के क्रॉप जैसे आप देखो हाईएस्ट एकरेज वीट का रहता है या दूसरा क्रॉप का रहता है, उसमें उतना पेस्ट अटैक नहीं रहता. तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होने से उसकी जो पेस्टिसाइड यूज करने का जो टेंडेंसी है वो भी चेंज हो जाता है. तो वो कंपैरेटिवली आप देखोगे तो खरीफ से रबी लो ही रहता है. ईयर एंड ईयर ग्रोथ दिखेगा आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है. पर कभी ऐसा नहीं होगा कि Q1, Q2 से Q3, Q4 में बिजनेस ज्यादा हो गया किसी भी कंपनी का. अरे सर, एक क्लैरिफिकेशन और चाहिए था. आपने एक प्रीवियस पार्टिसिपेंट को जवाब दिया था कि CTPR का अप्रूवल आपके पास है. तो सर CTPR तो वो शायद 9(4) कैटेगरी में आता है, तो क्या हम लोग के पास वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब क्लियर है कि हम लोग किसी और के लिए बना करके देंगे या कुछ और उस तरीके का अरेंजमेंट है? वो थोड़ा सा समझा देंगे प्लीज. CTPR हमारे पास ओन लाइसेंस है, हमने लाइसेंस तो जो प्लांट है नया उसके ऐसा नहीं. CTPR का हमारे पास 13 लाइसेंस ऑलरेडी आ चुके हैं. CTPR का ऑलरेडी टेक्निकल लाइसेंस में आ गया. हाँ, अच्छा, ठीक है सर. एंड CTPR में भी सर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें भी कोई स्पेसिफिकली आपके पास प्रोडक्ट्स हैं क्या? कोई उसकी रेंज आप बता सकते हैं? मैं समझा नहीं आपका पॉइंट. मैं कह रहा हूँ CTPR कैटेगरी के अंदर भी काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट है ना, जैसे CTPR मतलब क्लोरेंटिनिकोल 18.5% एक फॉर्मुलेशन है उसका. दूसरा फॉर्मुलेशन है CTPR प्लस थायोमिथोक्साम है, CTPR प्लस लैम्ब्डा है. ये 3 मॉलिक्यूल्स है अभी एज ऑन डेट. तो हमने उसमें से 2 स्टार्ट कर दिया है, 1 नहीं स्टार्ट किया है. हमारा ब्रांड में तो ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया है B2C. ओके. तो सर ये जो लाइसेंस आप जो कह रहे हैं, तो हो सकता है मेरा यहाँ पे थोड़ा समझ की डिफरेंस हो, तो वो प्लीज बताइएगा कि हम लोग के पास CTPR का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है कि 9(4) रजिस्ट्रेशन है? ना, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, 9(3) में है. 9(4) टेक्निकल का है. आई थिंक पीछे सर ने बोला था कि क्या CTPR का टेक्निकल लाइसेंस भी आ गया? हाँ, तो टेक्निकल लाइसेंस 9(4) टेक्निकल है ना, 9(4) में है. जैसे लाइसेंस है ना, 2 तरीके का होता है, एक फॉर्मुलेशन का अलग रहता है और टेक्निकल का अलग रहता है, बराबर. तो अभी हमारे पास पहले फॉर्मुलेशन का था, 9(4)F का था, वो तो ऑलरेडी है हमारे पास 1 साल पहले से. और अभी हमने लाइसेंस जो दिया वो 9(4)T दिया, मतलब टेक्निकल का लाइसेंस दिया, वो 2-3 महीने पहले हमारे पास आ गया. और 9(3) का तो है ना, फर्स्ट टाइम जो करते हैं उसको 9(3) बोलते हैं, उसका लेंथी प्रोसेस और लंबा प्रोसेस. ठीक है सर, थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you. Next question is from line of Suresh Pal from Peace Wealth. Please go ahead. Thanks for the opportunity, sir. Am I audible? Suresh, yes. Sorry, but then there's got a static from your line. Okay, just one second. Is it clear now? Yes, thank you.
Yeah, sir, thanks for the opportunity. My question is, most of the questions have been answered. I have two questions. Sir, since we are doing one new capex, so will there be any operating leverage benefit going ahead? And sir, what will be our growth guidance for this full year, that is financial year 24? So these are my two questions. Thank you. Can you please repeat your question? Yeah, my first question is, we have done a capex which is going to come live next quarter. So will there be any operating leverage benefit? And my second question is, what will be the growth guidance for this year? So I'm talking about full year. So operating, you are asking about the margin? Yeah, both, sir. Both. Yeah, margin only. So we will definitely have the operating benefit here in terms of margin as well operation. As we are saying that around 25% we are using for the captive consumption. So it is going to help us in both the operation as well as the margins. Okay, sir. And what about our growth outlook for this full financial year? So we are targeting around 20% overall year-on-year growth in this current year. So that is volume level growth or top line level growth? Both. And sir, one more question. Sir, since our capex is coming live in quarter 3, quarter 4, so what will be the effect of in terms of depreciation cost in our P&L statement? So depreciation will be around 24 crore will be the overall yearly depreciation we are targeting. That will be additional depreciation or total? In total. Total. So that is for full year, right? 24 crore? Yes. Okay, thank you. That's all from my side. Thank you. Next question is from the line of Nirvana Laha, individual investor. Please go ahead. Hello, sir. Opportunity के लिए धन्यवाद. Nirvana, sorry, your voice is not coming clear. Hello, can you hear me? Slightly better. सर मेरा सवाल एम्प्लॉय कॉस्ट पे है. तो अगर हम इस क्वार्टर का एम्प्लॉय कॉस्ट देखें तो पिछले क्वार्टर से 2.6 करोड़ ये क्यों बढ़ा है, जो कि लगभग 50% इंक्रीज है. तो क्या ये नए प्लांट के एम्प्लॉयज की वजह से है और ये क्वार्टरली लेवल पे कैसा रहेगा फॉर द रिमेनिंग 2 क्वार्टर? Employee cost mostly it is added in our sales team and the other, and so this will be stable now going forward because we added. लास्ट ईयर जो हम लोगों ने नए स्टेट लॉन्च किए थे तो उसमें जो रिक्रूटमेंट हुआ है, मतलब बिटवीन द ईयर हुआ है, उसका इम्पैक्ट अभी दिखता है. तो अभी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. जो एडिशनल होगा वो साइका प्रोजेक्ट के लिए होगा, वही रहेगा. बाकी सेल्स टीम का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो रिमेन सेम. अच्छा, तो टेक्निकल प्लांट का और कितना एडिशन आप एक्सपेक्ट करते हो? क्वार्टर भी अभी आपका 7.7 करोड़ एम्प्लॉय कॉस्ट है, तो अगर प्लांट कमर्शियल हो जाएगा तो कितना एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पर क्वार्टर या पर ईयर आएगा? Yearly 2 crore around it will be the additional cost. Okay, and that has not come in the books right now, right? So it will be additional from this level, from current level. It will come from next quarter. Hello? Yeah, it is not coming correctly in our books. It will be, once plant is operational, it will come to our profit and loss account. Okay, all right. और आपने बताया कि जो 20 करोड़ कैपेक्स इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू योर बजट, उसमें थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज उसकी वजह से हुआ है और थोड़ा सा एडिशनल इक्विपमेंट आपने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लगाया है. तो कैन यू गिव अस द स्प्लिट? 20 करोड़ में कॉस्ट एस्केलेशन की वजह से कितना हुआ है? The cost escalation is around 20-25 crores के आसपास हुआ है. Material and cost escalation and certain machinery also we added and it is in process. So around 20 crore as I mentioned already we spent on this capex till date. Right, sir. So out of that, how much pertains to the equipment and the boiler shifting cost, etc.? Shifting cost of 5 crore additional. So that is 5 crore additional for this boiler shifting cost. Okay, and for the equipment?
Equipment almost around 15 crores we incurred on the additional equipment till date. Okay. All right. And sir, last question. आपने seasonality of receivables के बारे में समझाया, तो सर इस अभी अगर हम देखें तो आई थिंक 160 डेज आपका रिसीवेबल्स चल रहा है. अगर हम एक साल पहले का फिगर देखें सितंबर 2022, वो कितना रहा होगा? इन्वेंट्री करोड़ में भी बता सकते हैं आप, जस्ट फॉर अ लाइक टू लाइक कंपैरिजन. Receivable, if you see already this presentation में हमें दिया हुआ है, it was around 169 crore receivable था last year as on 30 September, which is around 259 crore. सर 169 बोला आपने? Yeah, it is already given in our presentation. Okay. All right, sir. Thank you so much for answering my questions and all the best to you. Thank you. Thank you. A request to all the participants, please restrict to 2 questions per participant. Next question is from the line of Shreya Pukarna from Niveshaay. Please go ahead. Yeah, hello. Hi, sir. Thank you for the opportunity again. I wanted to know whether the capex of 220 crores that we've done, is it the amount spent till now, or is it the amount of the total capex for the technical plant? It's the amount spent till now. Okay. So are we expecting any further increase in this? Yeah, some more amount we are expecting, and so we are already this installation work is in process. A certain addition will be there in our total capex. Okay. Thank you, sir. Thank you. Next follow-up question is from the line of Nirav Jimudia from Annual Research. Please go ahead. सर थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी अगेन. सर ये जानना था कि हम जो नया टेक्निकल प्लान डाल रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट्स है, तो वी आर ऑल्सो पुटिंग अप एनटीवीडी एंड सीएमएससी कैपेसिटी. तो आगे जाके भी जो भी नए प्रोडक्ट्स आएंगे वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू ही होगा, मतलब इंटरमीडिएट भी हम ही बनाएंगे और टेक्निकल भी हम ही बनाएंगे, एंड दैट वुड बी यूज फॉर आवर फॉर्मुलेशन. किस हिसाब से रहेगा? और सर इसमें एडिशनल ये पूछना था कि हमारे प्लांट का फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा सालाना, मतलब जैसे हम प्लांट शुरू करते हैं तो सालाना हमारा फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ब्रेक इवन लेवल ऑफ द प्लांट. इसमें है ना, जो नया प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसमें कई प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे डाइमेथोमोट बताए, तो उसमें एक आध रो मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और बाकी हम इन हाउस सेट करके बना सकते हैं. और जैसे CTPR है तो उसका मेन की रो मटेरियल हमें इंपोर्ट करके बाकी जो छोटा छोटा है वो यहाँ से मैनेज करके उसको बनाते हैं. तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नेचर. तो ये अपने प्लांट में और इंटरनली कितना वेल मैनेज कर सकते हैं कि लोएस्ट इंपोर्ट हो और वेल मैनेज हो यहाँ लोकल लेवल पे. तो ये प्रोडक्ट हमने इसलिए सिलेक्ट किया. और सर हम यहाँ पे परमिथ्रिन नहीं बनाएंगे क्योंकि शायद इंडिया इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ परमिथ्रिन, तो एंड दैट इज ऑल्सो गुड प्रोडक्ट अपना. वो तो ऑलरेडी बनाया गया, तो इसके अलावा हम एडिशनल कर रहे हैं. बाकी ये तो जो हमने प्लान किया सिंथेटिक पायरेथ्रोन में, जैसे साइक्लोमेथ्रिन है, अल्फामेथ्रिन, परमेथ्रिन, बाइफेंथ्रिन, वो तो ऑलरेडी है और उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, वो प्रोडक्शन तो रहेगा ही रहेगा. ओके. और सर वो प्लांट का अगर आप ब्रेक इवन कॉस्ट बता दीजिए, फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा सालाना लेवल पे, तो पता चले कि कौन से लेवल से हमारा प्लांट प्रॉफिट करना शुरू होगा. अगर आप उसके ऊपर कुछ पर्सपेक्टिव दे सकते हैं तो. So it will be around 70 crore once we reach in the next 1 or 2 years. Our fixed cost will be around 70 crores. ओके. तो जब भी हम 600 से 800 करोड़ की सेल्स करेंगे तब हमारा फिक्स कॉस्ट 70 करोड़ रहेगा उसमें, ये मान के चले हम. हेलो नहीं, अगर हम पूरा 600 करोड़ करेंगे तब उसमें अराउंड हमारा 70 to 80 करोड़ का हमारा फिक्स कॉस्ट रहेगा. ओके. और जैसे जैसे हम मतलब पहले साल जैसे नेक्स्ट ईयर की बात करें FY24 और FY25 में, तो हमारा फिक्स कॉस्ट कैसे मूव होएगा, कुछ उस पर अंदाजा दे सकते हैं आप? तो इस करंट ईयर में इट विल बी अराउंड 35 to 40 करोड़ ही रहेगा. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर द आंसर्स. Thank you. Next question is from the line of Vivek Chaturvedi, individual investor. Please go ahead.
Sir, hi. Just to follow up on the last question, आपने कहा कि next year, I'm assuming FY25 में fixed cost will be 35 to 40 crores for the new plant. Is that correct? The current year it will be like this. Next year with slightly it will increase. Okay. And sir, how much is the sales that we are expecting from the new plant in the next year, assuming whatever 30, 40%, 50% capacity utilization next year, sales कितना expect कर रहे हैं उस plant से? The new plant you are saying? Yes, sir. Next year? Yes, sir. So next year around 150 crores we are targeting. This is FY25. Okay, 150 crores, and we would have a gross margin of about 20-25% in the first year? Yeah, around 25%. Around 25%. So, sir, would it be fair to say then that this cost that you mentioned, 70 crores for next year, fixed cost for the new plant, does this include the additional depreciation which is going to come online once we operationalize the plant? Pardon me, sorry, I think I missed out. This is the cost what I told 70 crores. It will not be 70, it will be 50 crores for next year. Fixed cost. Sorry, my mistake. Sorry, how much? How much will be the cost next year? 50 crores fixed cost for this new plant only. Okay, so sir, 50 crores is the fixed cost for the new plant in FY25, and how much is the depreciation is over and above this, the additional 20 crore depreciation that you had mentioned in the previous question? Depreciation will be overall, depreciation will be 24 crores. Correct. So, sir, currently we are trending at about 5 crores, 4-5 crore depreciation. So, we are having 20 crores additional depreciation plus about 50 crores of additional fixed cost. So, about 70 crores of additional cost would be included to our cost base in FY25. Is that understanding correct? Yes. Okay. And since we are going to be doing about 150 crores at 25% gross margin, so we will be basically doing what, 37, 38, 40 odd crores of contribution. So does that mean that our PBT level margins would be going down next year compared to the current year? You are asking about only new plant or overall? Because this is overall, right? Because if you are saying कि sir 40 crore का contribution margin करेंगे, right? And उसके अलावा अपना 70 crore का cost additional हो जाएगा, तो sir 30 crore additional cost is what I am calculating. Is there a mistake in my understanding? So if you overall total plant means existing plant plus new plant, overall if we see, then our PBT will anyway increase what we are targeting. So it will be increased by around 20 crore from FY24 onwards. Sorry sir, I did not get you. So अभी जैसे अपना PBT trailing 12 months is 60 crores. So आप बोल रहे हैं FY25 broadly how much do you think would be your PBT in a rough range? It will be around 60 to 65 crores. In FY25. Second plant is operational. That we are projecting. No, sir. Sorry, I missed your reply. So you are saying in FY25, assuming all the factors that you just outlined, what is your broad projection for PBT in FY25? Therefore, it is 60 to 65 crore will be my broad PBT projections. Okay. Okay. Understood, sir. Okay. That's all from my side. Thank you, sir. Thank you. Next question is from the line of Marshall, individual investor. Please go ahead. Yeah. My question is regarding this turnover, or we can say projection for this current year. So you mentioned that certain states we have launched recently. So can you please advise that which state currently we are not present, for example, especially in the northern, eastern, and in the west and south India, and what the plan to cover those states? Mainly South India is we are absent, and next year we have a plan. No, you mean next year you plan to launch South India or which part? South India.
South India. So currently we are not available in South India. Yeah. So since our current plant utilizes only 45 to 50%, so why don't we just launch it immediately for example, while waiting for the next 6 months or 1 year? बिकॉज साउथ इंडिया में अगर हमें ऑपरेट चालू करना है तो ऐसे इजी टास्क नहीं है कि भाई आज डिसाइड किया कल चालू कर देंगे. उसमें हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है कि भाई एम्प्लॉइज को ढूंढना है, पहले मैन पावर सेट करना, फिर नेटवर्किंग सेट करना. तो ये अभी से स्टार्ट किया, तभी नेक्स्ट ईयर जाके हम उसको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. हमारा एक बार अगर सब जगह पे स्टार्ट किया तो कई प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है. तो हमने पहले वेस्ट जोन सेट किया, फिर ईस्ट किया, फिर नॉर्थ किया, अब साउथ में प्लान करें. तो अभी नॉर्थ इंडिया में पूरा स्टेट कवर है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन वहाँ पर हमको परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना मिल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब क्योंकि जैसे बोल रहे हैं कि आप बताएं कि इस साल 20% ग्रोथ कर रहे हैं, 20% ग्रोथ करेंगे मतलब या ईयर ऑन ईयर, तो उसको और बढ़ाने के लिए, क्योंकि मतलब एक भी सेकंड क्वार्टर इज द बेस्ट वन, तो उसको और कहाँ से बढ़ाएं? तो और ऐसे बढ़ सकता है कि जो अपने जो केवल नॉर्थ इंडिया विच इज प्रीडोमिनेंट एग्रीकल्चर स्टेट्स, वहाँ पर जो हमने कितना हमको परसेंटेज सेल मिल रहा है उसको कैसे बढ़ाएं वहाँ पर? तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं? हमने ग्रोथ स्टोरी हमारी ऐसा है कि ये एक डायरेक्शन से नहीं है. जैसे B2B B2C दोनों में हमारा नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाते हैं, एरियाज नया नया डेवलप करते हैं और नया नया प्रोडक्ट ऐड करते रहते हैं. जैसे कोई नया स्टेट किया है तो कहीं वो स्टेट में कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा वेटेज रहता है, तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होना चाहिए. तो उसी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि भाई ये तीनों एस्पेक्ट कैसे फुलफिल होता है. बराबर. जैसे नया नया एरिया डेवलप करते रहेंगे तो वहाँ नया कस्टमर नेचुरली बढ़ेगा, और वहाँ का जो रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट है वो भी हमें कभी मैनेज करना पड़ता है. तो इस वे में 3 वे एंगल रहता है, फिर नया प्रोडक्ट, नया कस्टमर एंड नया एरियाज. तो वो बढ़ते जाएंगे. और नया जो सपोज नॉर्थ इंडिया है, हमने लास्ट ईयर चालू किया, तो इस साल हमें थोड़ा ग्रिप आएगा और नेक्स्ट ईयर हमें अच्छे वे में जा सकते हैं. तो 3 ईयर लगता है पूरा एस्टेब्लिशमेंट होने में एक स्टेट. वो सही बात. तो अभी हमने H1 में कौन कौन से स्टेट लॉन्च किए थे, मतलब H1 में, और उससे क्या करने हमको? इस साल कोई नया स्टेट नहीं किया. जो लास्ट ईयर का स्टेट है उसको ही हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं. अभी तो मतलब नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र किया था, तो उसको अभी हम एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, और साउथ इंडिया की हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं. अभी हरियाणा, पंजाब, यूपी सब फुली कवर है. वहाँ सब हमने लास्ट ईयर चालू कर दिया. अच्छा, नहीं मतलब ये तीनों स्टेट ऑलरेडी कवर है, मतलब हरियाणा, पंजाब, यूपी. हाँ. अच्छा ठीक है. मेरा सेकंड क्वेश्चन था, जो वी हैव लॉन्च सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक ड्यूरिंग Q2, सो कमिंग क्वार्टर में हम लोग क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं? मतलब कमिंग क्वार्टर में हमारे पास कोई प्रोडक्ट है अभी तो नहीं है, हमने कर दिया ऑलरेडी. अभी जो हम लोगों ने CTPR प्लस थायो किया है वो अभी अवेलेबिलिटी चालू हो जाएगा. तो ये एक मेजर प्रोडक्ट का प्लान है. अच्छा जस्ट लाइक जस्ट वन क्वेश्चन, जो हम लोग Q3 में जैसे किससे हमारे Q3 में परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, और Q3 में हम कंपेयर टू Q2 ऑफ दिस ईयर ग्रोथ देख रहे हैं कि ग्रोथ हम कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर ग्रोथ देख रहे हैं? देखिए ईयर ऑन ईयर जो है वो ग्रोथ देख रहे हैं. जैसे सर ने आगे के क्वेश्चन में बताया था कि खरीफ से 40% टोटल सीजन का अगर देखें टोटल ईयर का, तो 60% ऑलमोस्ट खरीफ में बिजनेस होता है, 40% जो है रबी में होता है. तो ईयर ऑन ईयर ऑब्वियसली ग्रोथ दिखेगा, पर क्वार्टर टू क्वार्टर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक. अच्छा, और कैपेक्स में जो अपना मतलब जो भी बढ़ा है तो उसको फर्दर बढ़ रहा है, तो उस पर कुछ कोई इट इज स्कोप टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट? फिर से रिपीट कीजिए आपका क्वेश्चन प्लीज. जो हमारे जो नया प्लांट जो लगा रहे हैं उसमें 200% इनकर हो गया है, कुछ और लगना बाकी है, तो इज देयर एनी स्कोप टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट? कैन यू रिपीट? एक्चुअली मैं हिंदी में बोलता हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि जो सॉरी टू इंटरप्ट यू, द लाइन फॉर द मैनेजमेंट ड्रॉप्ड, प्लीज टेक कनेक्ट. ओके.
Thank you for your patience. We have the line for the management reconnected. So sorry, you may continue with your question. No, thank you, sir. So मैं बोल रहा था कि जो अभी हमारा 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसको अभी 220 करोड़ इनकर हो गया उस पर, तो आप बोल रहे हैं कि अभी उसको और कुछ कैपेक्स लगना बाकी है, तो अभी जो टोटल जो इसमें लगना बाकी है तो उसमें ओवरऑल कुछ स्कोप है कि कुछ उसमें कॉस्ट कम की जाए या कॉस्ट बोलते कॉस्ट ऑप्टिमाइज का वैसा कुछ या उसमें कुछ स्कोप है? अभी सर कॉस्ट में तो कम तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो अभी पेमेंट बाकी है वो सब देना है, वो इक्विपमेंट से आ गया है, तो उतना कॉस्ट ऐड होगा 20-25 करोड़ के आसपास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक। This most of the capex, see, we are targeting for next 8 to 10 years. We did not do any further capex on this. और ये सारा expenditure ऐसा है जो कि one time only है, because once we install, we cannot change again. So that's why we decided to do that capex at this initial stage only. But साहब इसमें मैं I just want to give one small value input here. जैसे अपना अभी 30 करोड़ का सपोज में कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो सपोज इफ द कंपनी टेक सम अदर इनिशिएटिव टू मेक कॉस्ट रिडक्शन अक्रॉस अदर हेड, फॉर एग्जांपल आपके अदर एक्सपेंसेज है, एम्प्लॉयमेंट सैलरी काफी बढ़ गया है, 55 करोड़ से 77 करोड़ हो गया, मतलब ये 5.5 करोड़ हो गया, जो भी बाकी जो हेड्स है वहाँ पर सपोज अपन कुछ करें कि सपोज काल के 2-5-10 करोड़ वहाँ पर अपन कुछ बचा सके, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल बिकॉज साइज ऑफ कंपनी इज वेरी स्मॉल. Cost optimization is our continuous process. Every day means continuously we are targeting and we are focusing on this cost optimization. So that activity is ongoing and we are always exploring any area where we can optimize. To give targets to our employees and to renegotiate with the vendors and so on. So ये सब चीज करें तो I think whatever we can save, this will be helpful for our company. Yes, that we are always doing and we continue to do. Thanks for your suggestion as well. Thank you, sir. Thank you. Thank you. As there are no further questions, I will now hand the conference over to Mr. Sayam Pokharna for closing comments. Thank you all for participating in the call. Should you have any additional questions or wish to engage with us further, please do not hesitate to contact us. Our email addresses can be found at the end of the investor presentation. We look forward to our next conversation. Thank you. Thank you. Thank you very much. On behalf of Dharmaj Crop Cards Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines. Thank you. Thank you.